Hello and welcome to the lecture of Foundation Course in English 2. This is Unit 23 of Block 4, which is about reporting experiments, that is, how do we write reports. We have already done writing reports in the previous sessions. In this session, we are going to learn how to write reports on experiments. Experiments हम जानते हैं कि क्या होते हैं, किसी भी चीज़ पे किया हुआ कोई एक्सपेरिमेंट, कुछ केमिकल्स को मिलाने पर किया हुआ एक्सपेरिमेंट. तो हाउ डू वी राइट दोज रिपोर्ट्स? And we'll also learn various steps in conducting an experiment and how do we report an experiment, an example of reports along with punctuation commas. So steps in conducting an experiment. क्या steps रहेंगे experiment को conduct करने के लिए? Identify what you want to study in the experiment. तो identify करिए सबसे पहले आप किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू स्टडी इन दैट एक्सपेरिमेंट, एंड सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है. नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स फाइंड आउट व्हाट अदर्स हैव डन. दिस विल इन्वॉल्व अ स्टडी ऑफ द लिटरेचर एंड हाउ डू दे हैव डन इट विद अदर्स एंड हु हैव सेम एक्सपर्टीज. तो बाकी लोगों ने उसे कैसे किया है, हाउ डू दे हैव होल्ड इट, who have done the same experiment, then you have to study that and design the experiment, what material will be needed, what equipment would be useful. Then आप ये जानने के बाद कि experiment कैसे होगा, बाकी लोगों ने उसे कैसे किया, you will design the experiment कि ये कैसे होगा और क्या materials चाहिए होंगे, what equipment would be useful कि और क्या equipment है जो चाहिए होंगे और हमारे लिए useful होंगे. Then suggest a hypothesis. This is a prediction of what might happen in the experiment. So आप हाइपोथेसिस सजेस्ट करेंगे, उसके बाद कि आप ये कैसे करेंगे, इसमें क्या चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे, और ये एक प्रिडिक्शन रहेगा जो बता सकता है कि एग्जैक्टली आप एक्सपेरिमेंट में क्या करने वाले हैं, क्या एग्जैक्टली आपकी हैपनिंग होने वाली है एक्सपेरिमेंट में. और देन यू विल फाइंड द रिजल्ट्स एंड रिकॉर्ड दोज रिजल्ट्स विद यू. For writing report, you need these results. For writing report, you also need the materials you have used, equipment you have used. So take down the things with you. And now actual happening of the experiment में आप क्या करेंगे? Planning के बाद आपके पास आता है actual experiment. Now you will conduct the experiment as planned. जो भी आपने plan किया उसके accordingly आप experiment को conduct करेंगे. You will collect the results and record them. आप अपने use के लिए उसको बाद में record के लिए आप अपने पास रखेंगे. Then you will analyze the data and read conclusions. Compare what actually happened with the predictions in the hypothesis. And then आपने hypothesis में जो assume की थी चीजें उससे आपका actual जो conclusion आया है या actual जो happening हुई है वो कैसे different थी. You will compare this using the outline of these steps and giving recommendations for future work and further work. So आप outline लिखेंगे इन steps का और use करेंगे इन steps को, and then you will give recommendations for further work. So this is actually the steps which involve conducting an experiment. यहाँ पे आपने देखा identifying के बाद then you'll find out what others have done, then designing of the experiment, then suggesting hypothesis and results and recordings. So then you'll conduct the experiments and collecting results and then comparing it with the hypothesis and using the outline of these steps and giving recommendations for further work. Reporting an experiment में देखें तो these are the following contents which are used for reporting an experiment. सबसे पहले आप subject लिखेंगे कि exactly आपका objective क्या है, इस experiment का क्या subject है. Then you will write apparatus and material used in that experiment. Then you will write the procedure, how you have conducted that experiment. After the procedure, you will write the observations, what you have observed during the experiment और करते time आपने और क्या क्या चीज़ observe करी, क्या results रहे. After that, you will write the conclusion. What do you observe and what all the things you have seen. You will write the whole conclusion about that experiment. Then along with that, you will put some drawings, diagrams or graphs required for that experiment. So ये एक procedure रहेगा आपका experiment को report करने का, जहाँ पे आप उसमें subject and then apparatus and material used. Then you will write the procedure, observations, conclusions, and then drawing diagrams or graphs. एग्जाम्पल ऑफ रिपोर्ट में देखें तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर मेजरमेंट ऑफ एन आइडल गैस दैट इज हीटेड इन अ क्लोज कंटेनर. ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ रिपोर्ट का. देन आप देखेंगे कि कैसे मैंने इसे रिपोर्ट किया है टेम्परेचर और प्रेशर मैनेजमेंट मेजरमेंट्स को एक आइडियल गैस की.
जिसे हमने क्लोज कंटेनर में हीट किया। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस दैट इज एयर दैट वाज हीटेड इन अ क्लोज कंटेनर। Because the ideal gas was in a closed container, its volume remained constant. So it was a subject कि हम exactly experiment करने किस पे वाले हैं. So this was all the experiment which is about to study the relationship of temperature and pressure. हमने यहाँ देखा कि हम किस पे exactly करने वाले थे. हमारा subject क्या है कि हम relationship देखने वाले हैं temperature और pressure का एक ideal gas का, जिसे आपने closed container में heat up किया है. And because the ideal gas was in closed container, और उसका वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट रहा वो हम देखेंगे. देन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको प्रूव करके दिखाना है. PV equals to mRT. You have used this formula and then you will describe these particular things, that what are these. P, that means the pressure of gas, V means volume, M means mass, R means constant, and T is temperature. Then you are going to explain that. My objective is to explain this, and my objective is to conduct this experiment for proving this particular equation. Now we'll come to the procedure. कि हमारा procedure क्या रहेगा इस particular experiment को conduct करने का. Air, जो एक ideal gas है, it will be heated in a pressure vessel with a volume of 1 liter. And then the next procedure that follows here is attached to this pressure vessel, pressure transducer and thermocouple to measure the pressure and the temperature respectively of the air inside the vessel. So आप यहाँ पर चेक करेंगे, अटैच करेंगे प्रेशर वेसल को प्रेशर ट्रांसड्यूसर और थर्मोकपल के साथ, जहाँ पर आप मेजर करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर को इनसाइड द वेसल. And both of these transducer produce voltage signals. आप देखेंगे कि transducers में voltage signal आएगा in volts में, and that will calibrate it to the pressure and temperature of the air. And the atmospheric pressure हम जानते हैं कि it is 13.6. So यहाँ पर आपने पूरा procedure लिखा उसका. Then theoretical temperature of air was calculated as a function of the measured pressure values. Then after the procedure we'll come to the results and discussion. यहाँ पे हमने देखा कि क्या हमने जो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, तो उसके बाद हमने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी, क्या रिजल्ट्स रहे, and little bit of discussion and analysis of that. This section analysis the results of the experiment. The experiment went as expected. जो भी हमने हाइपोथेसिस करी थी वैसा ही हमारा एक्सपेरिमेंट गया. यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं हम रिजल्ट्स की कि जैसा भी हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही एक्सपेरिमेंट गया, एंड विद नो अनयूजुअल इवेंट्स. और कोई भी इसमें अनयूजुअल इवेंट्स नहीं रहे दैट वुड हैव इंट्रोड्यूस्ड एरर, जिसमें कुछ एरर आया हो या कुछ ऐसी चीजें हुई हो जो हमने अज्यूम नहीं करे थे. ऐसे कोई भी अनयूजुअल इवेंट्स नहीं हुए. द वोल्टेजेस एज मेजर्ड फॉर द प्रेशर एंड टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, और जो भी हमने वोल्टेजेस करी थी एक्सपेक्टेड प्रेशर और टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर के लिए, दे अपीयर सेम. एंड नाउ द फाइनल कंक्लूजन फॉर दैट. Overall, the experiment succeeded in showing that temperature and pressure for an ideal gas at constant volume and mass follow the relation of ideal gas equation. हमने यहाँ शो करके दिखाया कि अगर constant volume और mass है तो वो अपना relation शो करेंगे, जो हमने देखा PV equals to mRT. And differences existed in the experimental graph of temperature versus and pressure and the theoretical curve of temperature versus pressure. तो हम देखें अगर ग्राफ या फिर जो भी हमने उसका theoretical curve देखें तो it will remain constant, and these differences can be accounted for by experimental error. So this involves the whole report writing, जिसमें हमने अलग अलग देखा. पहले subject introduction, then you will come to the apparatus use, जो भी आपने method use किया, procedure, then you will follow with the results and discussion. You will do the analysis, what all hypothesis, and you will do the comparisons कि hypothesis और actual results में क्या फर्क रहा, and then you will come up with the final conclusion that what you have observed, your final analysis, your final viewpoint, final perspective, you will write in the conclusion. Now we are going to study about punctuation, commas. Now comma हम सब जानते हैं कि एक punctuation mark है which is used to indicate the separation of ideas. हम इसको ideas को separate करने के लिए element के एक sentence में use करते हैं. And there are occasions where a comma must be used. और कुछ occasions ऐसे रहते हैं जहाँ पे हमें comma use करना पड़ता है, और उनको अगर हम omit कर दें comma को वहां से तो वो sentence ही गलत हो जाता है. इसलिए comma कई बार बहुत ज्यादा mandatory हो जाता है use करना. उनके use के बिना sentence ही wrong हो जाएगा.
नाउ द रूल्स फॉर कॉमा वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. हम कब कब कॉमा को यूज करते हैं एक स्टेटमेंट में या एक सेंटेंस में. कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम कॉमा को यूज करते हैं वर्ड्स या वर्ड ग्रुप्स को अलग करने के लिए विद अ सीरीज ऑफ 3 और मोर. 3 या 3 से ज्यादा एक ही जैसी चीजें हैं या उनको आप अलग अलग करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं वर्ड्स को या वर्ड ग्रुप्स को, तो आप वहां पर कंफ्यूजन को हटाने के लिए कॉमा का यूज करते हैं. सबसे पहला रूल यही रहेगा कि आप इस तरीके से उनको अलग अलग करने के लिए कॉमास का यूज करेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ दिया है माई 10 million estate is to be split among, किस किस के बीच में स्प्लिट करनी है, among my husband, daughter, son and nephew. सो यहाँ पर जो सेम कैटेगरी के लोग थे वर्ड से वर्ड फ्रेजेस के, उनको आपने कॉमा से अलग अलग कर दिया है टू अवॉइड कंफ्यूजन. omitting the comma after son would indicate that the son and the nephew would have to split 1/3 of the estate. Rule number 2 for using comma: use a comma to separate two adjectives when the word can be inserted between them. हम कॉमा को तब यूज करते हैं जब हम दो एडजेक्टिव्स को एक साथ यूज करते हैं और कोई वर्ड हम बीच में फिट कर सकते थे बट वी हैवंट यूज, सो वी यूज कॉमा फॉर दैट. इसका एग्जांपल लेते हैं कैसे हम दो एडजेक्टिव्स के बीच में यूज करते हैं. जैसे कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी मैन, तो आप यहाँ कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग के बाद आप कुछ लगा सकते थे, स्ट्रॉन्ग मसल, स्ट्रॉन्ग बॉय, कोई वर्ड ऐड कर सकते थे, पर आपने नहीं किया. सो यू आर राइटिंग टू एडजेक्टिव्स टुगेदर. सो आप यहाँ पे कॉमा से उनको सेपरेट कर रहे हैं. इज अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी मैन, वी स्टेड एट एन एक्सपेंसिव समर रिसोर्ट, और हम एक एक्सपेंसिव समर रिसोर्ट में रहे. यू नॉट से एक्सपेंसिव एंड समर रिसोर्ट, सो नो कॉमा. So no comma is required in this case. Rule number 3, we use comma when an adjective is used with other adjectives. ly कोई adjective आप use कर रहे हैं और उसके साथ कोई और adjective use कर रहे हैं, तब भी आप इस तरीके से comma का use कर सकते हैं. Felix was a lonely young boy, तो ly adjective आपने use किया है यहाँ पे और साथ में एक और adjective use किया है young, तो वहां पर भी आप इस तरीके से कॉमा का यूज करेंगे. आई गेट हेडेक्स इन ब्राइटली लिट रूम्स, और आपको हेडेक्स मिलते हैं बहुत ज्यादा ब्राइटली, एंड यू राइट लिट रूम्स. सो ब्राइटली इज नॉट एन एडजेक्टिव बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज अलोन विद रूम्स. ब्राइटली रूम्स आप नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कॉमा का यूज नहीं किया है, क्योंकि ब्राइटली अपने आप में एक एडजेक्टिव नहीं है. यू कांट राइट अलोन विद रूम्स, सो देयर इज नो कॉमा यूज बिटवीन ब्राइटली एंड लिट. बट इट लोनली बॉय हो सकता है एंड इट्स अलोन कैन आल्सो बी एडजेक्टिव, सो इसलिए हमने वहां पे कॉमा का यूज किया है. रूल नंबर 4 वेयर वी यूज कॉमा इज बिफोर और सराउंडिंग द नेम और टाइटल ऑफ अ पर्सन डायरेक्टली एड्रेस. सो कई बार आपने नेम या टाइटल बताना होता है डायरेक्टली, तो भी हम कॉमा का इस तरीके से यूज करते हैं. विल यू आयशा डू दैट असाइनमेंट फॉर मी. सो यहाँ पर आपने देखा कि आपने नाम के बताना था बीच में एकदम से, सो कई बार वो टाइटल देना पड़ता है या नाम देना पड़ता है, तो हम इस तरीके से कॉमास का यूज करते हैं टू सेपरेट इट. यस डॉक्टर आई विल, पहले में हमने देखा नाम, सेकंड में टाइटल, सो इस तरीके से कॉमा से हम उनको सेपरेट करते हैं. नेक्स्ट रूल, यूज कॉमास टू सेट ऑफ एक्सप्रेशन दैट इंटरप्ट सेंटेंस फ्लो. तो आप कॉमास का यूज कर सकते हैं ताकि आप एक्सप्रेशंस को सेट ऑफ कर सकें जो इंटरप्ट करते हैं सेंटेंस का फ्लो. उनके लिए आप कैसे उनको अलग कर सकते हैं. आई एम, as you have probably noticed, very nervous about this. तो आपका एक पूरा सेंटेंस था I am very nervous about this, बट आपने बीच में कुछ फिट किया as you have probably noticed. ये इंटरप्ट कर रहा था सेंटेंस को प्रॉपर फ्लो में, वहां पे हमने उसको ऐड करना था, तो हमने उसे कॉमा के थ्रू और कॉमा को यूज करके हमने ऐड कर दिया, ताकि जो एक इंटरप्टेड फ्लो आ गया था बीच में पूरे सेंटेंस के बीच में, वो हमने देना भी जरूरी था, तो हमने उसको कॉमा के साथ यूज करते हुए बता दिया कि I am, as you have probably noticed, very nervous about this. So complete sentence was I am very nervous about this, but we have to add this in between, but it is interrupting the flow of the sentence, so we have used commas to make it clear, to avoid confusion. Rule number 6, when starting a sentence with a weak clause, use a comma after it, and conversely do not use a comma when the sentence starts with a strong clause followed by a weak clause. अगर सेंटेंस वीक क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है तो आपको कॉमा यूज करना चाहिए, बट अगर सेंटेंस स्ट्रॉन्ग क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है तो यू विल नॉट यूज कॉमा. अगर स्ट्रॉन्ग क्लॉज पहले और वीक क्लॉज बाद में है तो डोंट यूज कॉमा इन दैट केस. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस लेट मी नो नाउ. सो आपका मेन क्लॉज क्या है इसके अंदर, लेट मी नो नाउ, कि मुझे अभी बता दो, बट यू आर गिविंग वन मोर क्लॉज, वीक क्लॉज, अगर आपको नहीं पता
So that is a weak clause, but actual main clause is let me know now. So first weak clause था, इसलिए हमने उसे comma से separate किया. But if you are putting in that way कि आप पहले उसमें strong clause लगा रहे हैं, so there is no need of comma. अगर strong clause पहले है और weak clause बाद में, so let me know now if you are not sure about this. मुझे बता दो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है. So let me know now. Main clause पहले आ गया. If you are not sure about this, weak clause बाद में, so there is no need of comma when weak clause is after strong clause in a sentence. But you have to use it if you are writing weak clause first and strong clause later. Rule number 7, use a comma after phrases of more than 3 words that begin a sentence. If the phrase has fewer than 3 words, the comma is optional. आप comma use करते हैं after phrase of more than 3 words. अगर एक sentence जो है वो शुरू हो रहा है और phrase है 3 words का, उसके बाद आप comma use कर सकते हैं. और अगर उसमें कम है 3 words से, तो comma आपके लिए optional हो जाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं, to apply for this job, यहाँ पे 3 से ज़्यादा word थे और sentence कर रहे थे आप उसे start, तो comma का आपको use कर लिया आपने. to apply for this job, you must have previous experience. On February 14, many couples give each other candy or flowers. तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही word थे, February 14. So यहाँ पर आपको जरूरी नहीं लगा comma का use करना कि बहुत सारे couples candy या flowers देते हैं. So अगर 3 से ज़्यादा word या phrase हो वहाँ पर, तो आप वहाँ पर comma का use करते हैं when you are beginning a sentence. But if it is fewer than 3 words, there is no need of comma. It's optional. So that is the use of comma. You have studied that there are 7 different rules that you must know when you are using the comma, because it's a very important punctuation that we use in our daily life writing skills. जैसे कि हम बोलते टाइम pause वगैरह का use करते हैं, but how do we portray it in writing skills? उसके लिए हम comma का use करते हैं to signify or represent pause kind of thing in your writings. So this is a very important punctuation mark and इसके use जो है बिल्कुल clear तरीके से आपको समझ आने चाहिए, and you must use it properly in your writing skills. So we have studied about reporting experiments in this session along with the use of comma, which is a punctuation mark. So that is all about this session where we have studied the whole foundation course in English 2, and all the best for your future by now. Thank you. Thanks a lot.